Hello students. So now I will discuss the lecture number 6, which is introduction of isomerism. So now I will discuss about the isomerism. So what is isomerism? Isomerism is related to the organic compounds nomenclature. ये भी एक nomenclature का ही part है. According to that, we will identify the iso compounds and the same molecular form which has same molecular formulas but different in the structure. So isomerism is the phenomena in there the organic compounds, the molecule have same molecular formula but different in the structure. Molecular formula is related to the means the compound have same carbon atom, same hydrogen atom, same oxygen atom, other different heteroatom which will be same, but the molecular but the structure, the chemical structure will be different of the same compound which has सेम मॉलिकुलर फार्मूला. अब क्या होगा जब मॉलिकुलर फार्मूला सेम रहने से स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से क्या होगा कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ दैट विल बी डिफरेंट. So isomerism the existence of molecule that have the same numbers of the same kinds of atom but the differ in the physical and chemical properties. There are two types of isomerism, structural isomerism and stereoisomerism, which can be divided into further subtypes. Isomerism के कई types होते हैं जैसे कि structural isomerism, stereoisomerism and ये फिर further divided होते हैं other types में. Okay? Therefore, the compounds that exhibit isomerism are known as isomer. The organic compound which will give the isomerism, the compound will be called isomers. Now, the word isomer is derived from the Greek word isos and the meros which mean equal part. जो isomer है ये Greek word से derived हुआ है जिसमें आइसो और मिरोस दो पार्ट होते हैं और इनका जो मीनिंग होता है इट विल बी इक्वल पार्ट्स. दिस टर्म वाज क्वाइंड बाय द स्वीडिश केमिस्ट जैकोब बर्जिलियस इन द ईयर 1830. जो आइसोमेरिज्म है इसको डिराइव किया था, इसको फाउंड किया था स्वीडिश केमिस्ट ने जिनका नाम था जैकोब बर्जिलियस एंड कौन से ईयर में किया था 1830 में. Isomerism is a consequence of the fact that the atoms of a molecular formula can be arranged in the different ways to give the compound which is called the isomer and but that is differ in फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो आइसोमेरिज्म में क्या होता है, आइसोमेरिज्म में जो आइसोमर्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आइसोमेरिज्म शो करते हैं, मॉलिकुलर इनके एटम जो होते हैं वो सेम होते हैं कार्बन हाइड्रोजन, बट इनमें डिफरेंस क्या होता है इनके स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने की वजह से इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती हैं. टू मेक अ क्रूड एनालॉजी, two bracelets each consisting of 5 red and 5 green bands could be arranged in many different isomeric forms depending on the order of the color. तो जैसे कि अभी बताया एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे 2 ब्रेसलेट्स हैं और 5 रेड हैं और 5 ग्रीन हैं. अब वो सेम होंगे, 5 हैं मतलब एक नंबरिंग उनकी सेम है लेकिन उनको जो अरेंज किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द कलर किया गया है, मतलब उनके कलर के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट वे में अरेंज किए गए हैं. तो ईच ब्रेसलेट वुड हैव द सेम पार्ट्स, मतलब सेम है नंबरिंग पार्ट सेम है, डेट इज द 5 रेड एंड 5 ग्रीन बेड्स बट ईच वेरिएशन वुड बी डिफरेंट. वन कुड ऑल्सो इमेजिन combinations of those same beads in which pendant chain were attached to a bracelet in a variety of ways. ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर हम अब
जब उनको अटैच कराएंगे किसी पेंडेंट चेन में एज अ पेंडेंट की तरह, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। इसी तरह से कंपाउंड की बात होती है। कंपाउंड को भी जब हम सेम नंबर हैं, सारी चीज़ें सेम है, लेकिन हम अगर उनको अरेंज करेंगे तो वो डिफरेंट वे में आएंगे और उनकी नेमिंग भी डिफरेंट हो जाएगी। So one might be imagined two bracelets of the same red-green order but with identical chains attached in different orientations. Such structures also would be analogs to isomer. In a more suitable analogy, one's hands can be seen as isomeric. Each hand possesses the same kind of finger, but a right hand can never be superimposed perfectly on a left hand. They are different. इसी तरह से अगर हम अपने हैंड्स की बात करें तो यहाँ भी हम देखेंगे कि दोनों में 5 फिंगर्स हैं, ओके। लेकिन अगर हम इनको सामने रखते हैं तो सामने रखने पे इनकी जो मतलब इमेज है वो डिफरेंट है। अगर हम इधर से देखें तो दिस विल बी डिफरेंट, और इधर से देखें तो दिस विल बी डिफरेंट। ये नेवर बी सुपर इम्पोज, एक दूसरों को सुपर इम्पोज नहीं करेंगे। तो दिस इज द आइसोमेरिज्म। टाइमिंग एंड एनर्जी आर ऑल्सो फैक्टर्स इन आइसोमेरिज्म। इसके अलावा जो डिफरेंट होता है टाइमिंग और एनर्जी ऑफ द कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स आर मोबाइल एंटिटीज undergoing all sorts of rotational motions that change their shapes, and those motion requires energy. So some molecule can be the same or on one timesical or set of energy conditions but different or isomerics or other. So finally an isomer must be an energy minimum. It must lie in energy well. So there are two types of general isomers. Constitutional isomer are the molecule of different connectivity analogs to simple bracelet in which the order of red and green beads indifferent. The second type of is stereomer. In the stereoisomerism, the connectivity in the same but the parts are oriented differently in space. अब इसमें हमने देखा दो टाइप के आइसोमर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल है और स्टीरियो है। कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल ब्रेसलेट का लिया था, तो मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो सिंपल ब्रेसलेट्स की तरह एक दूसरे से ज्वाइन होकर मतलब डिफरेंट वे स्ट्रक्चर शो करेंगे। स्टीरियो में क्या होगा, कनेक्टिविटी सेम होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल में कनेक्टिविटी डिफरेंट होगी। जैसे एक एटम डिफरेंट आ गया बीच में, दूसरा एटम डिफरेंट आ गया, तो वो कनेक्टिविटी डिफरेंट हो जाएगी। ऐसे स्टीरियो में क्या होगा, स्टीरियो में कनेक्टिविटी भी सेम होगी, लेकिन इसमें जो मूवमेंट होगा कंपाउंड का वो डिफरेंट होगा। इसकी वजह से उसमें डिफरेंस आएगा उसके स्पेशियल अरेंजमेंट में। सो the constitutional isomer that differ in connectivity are called constitutional. Sometimes structural isomer, जो जिनकी कनेक्टिविटी में ही डिफरेंस है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर कहलाते हैं और उनको हम स्ट्रक्चरल आइसोमर भी बोलते हैं। दे हैव द सेम पार्ट बट दोज पार्ट्स आर अटैच्ड टू ईच अदर डिफरेंशियली। The bracelet of the green and bead mentioned above are analogous to constitutional isomer. Now, the simplest hydrocarbon like methane, ethane and propane have no constitutional isomer as there is no other way to connect the carbon and hydrogen of these molecule constituent with the tetravalency of the carbon and the univalency of hydrogen. तो अगर हम बात करते हैं मीथेन, ईथेन और प्रोपेन की, तो ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं कि ये आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। वाई? बिकॉज इनका कोई अदर वे ही नहीं है कनेक्ट होने का कार्बन से, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्टली कनेक्ट है। यहाँ पे वो कंपाउंड आएंगे जो या तो जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बन एटम है या जिसमें बीच में कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा है, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा है, वो ही कंपाउंड आइसोमेरिज्म शो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। तो जैसे मीथेन, अब मीथेन का कोई अलग
कोई डिफरेंट वे क्या होगा हाइड्रोजन से अटैच होने का, वो डायरेक्ट ही हाइड्रोजन होगा, वो कार्बन से अटैच होंगे। 4 कार्बन है, 4 का एक सेम वे ही होगा अटैच होने का। ऐसे इथेन है, इस इथेन में भी 2 कार्बन है 2 हाइड्रोजन है, तो दोनों 2 कार्बन है 6 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से, 3 हाइड्रोजन एक कार्बन से अटैच हो जाएंगे। इसी तरह आपका प्रोपेन है, तो प्रोपेन में भी यही है। तो ये ऐसे कंपाउंड है जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं। हाउएवर देयर आर 2 डिफरेंट ब्यूटेन्स C4H10। अब जो C4H10 है, यहाँ से आपके कार्बन नंबर ज़्यादा हो जाते हैं और हाइड्रोजन नंबर भी ज़्यादा हो जाते हैं। सो ये कंपाउंड जो होते हैं ये आपके आइसोमेरिज्म शो करना शुरू करते हैं, और ये फॉर्म भी डिफरेंट देते हैं, आइसोफॉर्म, नियोफॉर्म। ओके, so however there are 2 different butanes C4H10 and these 2 molecules called butane and isobutane are constitutional isomer। जैसे कि C4H10 दिस इज ब्यूटेन। अब ब्यूटेन को हम एक नॉर्मल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3, दिस इज द नॉर्मल ब्यूटेन। नाउ अगर हम इसको आइसोफॉर्म में लिखते हैं तो ये आपका क्या आएगा, CH3 CH CH3 and CH3, this is isobutane। So in there we can see the number of the carbon atom, the number of the hydrogen atom will be same. There are 4 carbon, there are 4 carbon, there are 10 hydrogen, there are 10 hydrogen, but the structure will be different. This is normal structure and this is iso structure. So ये है एक isomerism। दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल। अब ये मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर डिफरेंट हो गए, तो डिफरेंस होने की वजह से इनकी जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी हैं ये भी डिफरेंट होंगी। ब्यूटेन हैज़ इट्स 4 कार्बन एटम्स बॉन्डेड इन अ कॉन्टिन्यूअस चेन। आइसोब्यूटेन हैज़ अ ब्रांच स्ट्रक्चर। ओके, जो नॉर्मल ब्यूटेन है वो तो कॉन्टिन्यूअस चेन में है, और जो आइसोब्यूटेन है वो कौन से उसमें, ब्रांच में। तो एक हम ये भी बोल सकते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन इज इन स्ट्रेट चेन एंड द आइसोब्यूटेन इज इन ब्रांच चेन, it is branch structure. The number of possible constitutional isomers increase greatly with the number of available atom. There are 2 butanes but there are 3 pentanes C5H12, 18 octane C8H18 and no fewer than 366 319 constitutional isomer of the hydrocarbons containing 20 carbon atoms and 42 हाइड्रोजन। तो इसी तरह से जैसे आपका 3 स्टार्टिंग के बता दिए, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, इसका तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर है नहीं। ब्यूटेन जहाँ से स्टार्ट होता है, ब्यूटेन C4 जहाँ से 4 कार्बन स्टार्ट होते हैं कंपाउंड में, वो आइसोमेरिज्म देना शुरू करते हैं। तो जैसे ब्यूटेन के 2 हैं, पेंटेन के 3 होंगे, ऑक्टेन के 18 होंगे। इसी तरह से फर्दर बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे कार्बन एटम और हाइड्रोजन एटम बढ़ेंगे आइसोमर्स बढ़ते जाएंगे। जैसे कि अगर 20 कार्बन और 42 हाइड्रोजन है किसी कंपाउंड में, सो इट विल बी 360 319 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर। नाउ द स्ट्रक्चरल आइसोमर। Structural isomers generally defined stereoisomers are generally defined the structural isomer have the same composition but it will means same molecular formula but it will be difference in structure. Now the conformational isomer like methane is a molecule that is a perfect tetrahedron, and so it is commonly said that no isomerism is possible with methane. However, the carbon hydrogen bonds of methane constantly vibrate and bend so that
on very short time scales, or an apparent isomerism can be said to exist. But these structures are not energy minima, and so they do not qualify as isomer. As complexity increase, the isomerism induced by rotation about bonds becomes a bigger factor. In ethane, for example, both carbons are approximately tetrahedral. Now, the classification of the isomer and the isomerism. There are two isomers: constitutional isomer, this will be structural, and the stereoisomers, this will be spatial. So, in the structural isomer, it will be divided into further some types of isomerism like chain isomerism, isomer, position, functional group, metamerism, metamers, tautomers, and the last is ring chain isomerism. This will be given by the alicyclic compound. So, in there we can see 6 types of structural isomers and the isomerism. First is the chain isomer. Chain isomer is called chain isomerism, मतलब chain isomerism जो compound chain isomerism देगा, it will be chain isomer. Position isomerism, functional group isomerism, metamerism, it will be given by the metamers, tautomerism and the ring chain isomerism. So, this is the classification of structural isomerism, and in all types of isomerism the molecular formula will be same of the organic compound, but different in the structure of the organic compound. It will be discussed with example in my next lecture. Okay. Now, the stereoisomer is also called the spatial isomer. In the stereoisomer, the compound have the same molecular formula, same structural formula, but it will be different in the spatial arrangement of the carbon atom and the movement of the carbon atom. So, in there two types, diastereomer and enantiomer. The diastereomers also divided is cis-trans isomerism, and it will be shown in the geometrical isomerism, and other is the conformers and rotamers, like that. So, example of the cis-trans isomerism, in there double bond is very important and the movement of the double bond will be restrict in the cis-trans isomerism, because in the geometrical isomerism. So, this is the cis form, this is the trans form. Okay. Now, conformers and rotamers, these are the examples of conformers and rotamers. Now, other is the enantiomer. Enantiomer will be found in form in the optical isomerism. Optical isomerism is related to the optical activity of the organic compound, and in there two forms is form, R form and S form. Okay. So, these are the example of the enantiomer. And in the optical isomerism, chiral carbon is very important, because the chiral carbon is related to the these are the chiral carbon. Chiral carbon is related to when one carbon is attached to the different type of group, different type of atom. So, the carbon so the compound will be chiral, and the chiral compound only give the optical isomerism, because it will be optically active. Without chiral carbon, the compound will be optically inactive. Only chiral carbon compound which is optically active, it will be rotate on the optical it will be rotate on the light
with in the Nicole which is passed by the Nicole prism, okay, and it will be rotate in one time dextro form and one time levo form, means right form and the left form. So, and form the enantiomer. So, these are the examples of the stereoisomer. So, here we can see that the structure will be same, but the rotation rotation is different. So, the isomers will be formed. Now, we will repeat the lecture. In the isomerism, the isomers are the organic molecule which has same molecular formula, but different in the structure, and isomerism is the phenomena where the isomer will be formed. Okay. Now, the isomerism is divided into two parts. First is the structural isomerism and the second is the stereoisomerism. In the structural isomerism, the compound will be same molecular formula, but different in the structure, and it will be divided into 6 parts like chain isomerism, position isomerism, functional group isomerism, metamerism, tautomerism and ring chain isomerism. But in the stereoisomerism, the compound have the same molecular formula, same structural formula, but it will be different in the spatial arrangement of the carbon atom and the movement of the atoms. Okay. And it will be divided into two parts. First is the geometrical isomerism or second is the optical isomerism. Optical isomerism is related to the optical activity of the compound, and the geometrical isomerism is related to the restriction of the double bond in the organic compound, movement of the restriction of the double bond in the organic compound. So, optical isomerism further divided into R form, S form, EZ form, and the geometrical isomerism is divided into cis trans form. So, these are the examples of the isomerism. In my next lecture, we will discuss about the structure isomerism with example.